So as far as infrastructure is concerned, what all you have to cover in this? Infrastructure हिंदी में बोलते हैं मूलभूत ढांचा, जिसके ऊपर बाकी सब चीजें खड़ी हैं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसके अंदर हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से आप इकोनॉमी में डिवाइड करते हैं। अदरवाइज देयर इज पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको जिस तरह से मर्जी एक्सपेंड करते चले जाइए। सो एनी बेसिक नैरेटिव दैट यू वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ इट यू कैन, है ना। तो जैसे हम इसको यूज करें तो इट कैन बी इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह यूज होता है ना। तो ये कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब पढ़ना है इकोनॉमी के अंदर, तो हमें उस टाइम पे किन चीजों का ध्यान देना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड दूसरा जो आ रहा है वो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। व्हेन आई से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट आई मीन इज रोड्स, dams. When I say road, that means national highways, state highways, that kind of projects. And then dams, then any kind of other irrigation projects. So that is a relevant infrastructure area, because आप जैसे पढ़ते हो कि सतलुज यमुना लिंक केनाल या कोई भी कृष्णा गोदावरी बेसिन, इनके इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ऊपर काम आता है, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बेसिस पे कभी कभी क्वेश्चन आता है। भारतमाला परियोजना रोड्स के अंदर है तो वो आ जाता है, सागरमाला परियोजना आ जाता है, लाइक दिस। तो नेक्स्ट इज पोर्ट्स, ये न्यूज में रहते हैं पिछले पूरे साल में, ठीक है। एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इसको लेके अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे अमृत है, उससे पहले JNNURM था, देन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन दैट फॉर्मेट वी कैन स्टडी द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जनरली टॉपिक्स प्रीलिम्स में आए हैं अभी तक, ओके। एज फार एज द इकोनॉमिक, ये वर्ड आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, ये चार चीजें आनी चाहिए। तो प्रोडक्शन को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या है? एनी टाइम वी से प्रोडक्शन, so we need to have market infrastructure which will cater to the production requirements at primary, secondary and tertiary levels, producers in the economy. When I say distribution, so I need to have relevant policies, institutions, etc., etc. ये वहां पे है, policies and institutions जो डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखेंगे। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फॉर एग्जांपल, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट एंड पार्सल है इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो इस चीज में काम करते हैं। देन कंजम्पशन, so do we have an infrastructure there? Yes, we do. Fair price shops, for example. Exchange, so here also we got markets, we got financial markets, they help in exchange। कहा ही गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उनके नाम में है ना। तो वी गॉट ऑल दी फाइनेंशियल मार्केट्स देयर। तो इस तरह से अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनफैक्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक टर्म है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अभी ये वाला जो पूरा सेगमेंट है ये तो तुम पढ़ चुके हो देखा जाए तो। इसमें इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक को जब हम पढ़ने बैठेंगे तो इस पे फोकस करेंगे, साइड वाला फिजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो इस पूरे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तो आप अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ ही रहे हो। दिस इज समथिंग दैट इज ऑफ कंसर्न टू अस राइट नाउ। आई होप दैट इज सफिशिएंट डायरेक्शन कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, एंड वेयर आर वी टू बी डीलिंग विद दिस। एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, उसको लेके बहुत सारी चीजें न्यूज में रही हैं पिछले पूरे साल, अलग अलग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या किसी भी एस्पेक्ट्स को लेके न्यूज में है, तो वो हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। गिव अ हेडिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसको अगर देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी गवर्नमेंट की चल रही हैं। पहले तो उन स्कीम्स का एक अप्रेजल ले लेते हैं कौन कौन सी हैं, और आपको इन स्कीम्स का ध्यान रखना है फ्रॉम 4-5 परस्पेक्टिव्स। पहली तो है अमृत, दैट इज अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अमृत, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी नॉट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन।
दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, दिस इज फॉर हाउसिंग, PMAY अर्बन। तीसरी स्कीम है जो हमें कंसर्निंग है, दैट इज क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0। ठीक है, इसके अलावा इसको लेके है एक ट्यूलिप, दैट इज द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। ठीक है, देन देर इज आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इसके भी कंपोनेंट्स है। तो ये बेसिक स्कीम्स का पहले तो आर्किटेक्चर आपने पढ़ लेना है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाला डॉक्यूमेंट मैंने आपको अवेलेबल कराया उसमें से। ठीक है, ओके। नाउ एज फार एज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, थोड़े से उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे के अपडेट्स हैं या न्यूज अपडेट्स हैं वो नोट कीजिए। सो देखिए, अप्रोक्सीमेटली 48%, 24% एंड 15%, 48%, 54% and 15% of urban capital expenditure comes from center, state and local governments. Approximately 48%, 24% and 15% of urban capital expenditure comes from center, state and local government. ये सीधा सीधा ही prelims का क्वेश्चन बन सकता है। Okay. Further, 3% is contributed by public-private partnerships and 2% as commercial debt. 2% as commercial debt. कई बार ना ये पूछ लेते हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आता कहां से, हु इज द एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट्स मोर capable or responsible for funding the urban infrastructure projects. So that's what we are focused here also. Okay. Then आगे लिखिए, the World Bank estimates that urban India needs nearly $840 billion, nearly $840 billion as investment, of which 55 billion US dollars is required annually per year. इतनी हमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ओके, till date various committees have been formed, for Indian urban infrastructure and services, Indian urban infrastructure and services, the most important being ईश्वर जज आलूवालिया कमेटी। जब भी अर्बन रिफॉर्म पे कुछ भी आएगा ना, तो ये लेडी है जिसका सबसे ज्यादा नाम आता है, ईश्वर जज आलूवालिया। Not now, but since like last 2 to 3 decades, she is the person who has been advising on urban infrastructure, not just to India but to UN also. Okay, fine. So इनकी भी कमेटी का नाम रखना है बस याद आपने, और कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। फिर जो प्रीलिम्स के रिलेटेड इसमें और मामला क्या है कि ज्यादातर हमारा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है उसी में ट्रबल है। अब ध्यान से देखो,
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनकी सबसे कम इन्वेस्टमेंट है ना। तो दूसरे तौर पे उनके सबसे कम पर्सनल भी डिप्लॉयड हैं इसके अंदर देखा जाए तो फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, दीज आर द थ्री मेजर कंसर्न्स ऑलवेज विद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो। अच्छा, इसके बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इन न्यूज। नेक्स्ट आइटम ऑन आवर एजेंडा आर डैम्स एंड HEPs, hydroelectric projects. So there is something in news that is called Etalin hydroelectric project, ETALIN, Etalin HEP. जब भी कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज में हो तो उसमें हमेशा जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है वो ये होता है कि कौन सी रिवर पे बना है ना, डैम है तो, और दूसरा होता है कि कहाँ है, लोकेशन क्या है। सो दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश। पहले यही दो चीजें नोट करनी है, अरुणाचल प्रदेश एंड रिवर्स जो हैं। तो देखिए, द प्लान कंबाइंस टू रन ऑफ द रिवर स्कीम्स, टू रन ऑफ द रिवर स्कीम्स। रन ऑफ द रिवर स्कीम्स मतलब नदी बहती जाएगी, तुम पानी स्टोर नहीं करोगे ज्यादा, ठीक है। कौन सी दो रिवर्स हैं यहाँ पे, टैंगोन एंड ड्री, TANGON, टैंगोन एंड ड्री, DRI rivers, टैंगोन एंड ड्री रिवर्स। ओके, अब ये कहां से आई? सो दे आर बोथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिबांग रिवर, both of them are tributaries of दिबांग रिवर। दिबांग, दिहांग, लोहित, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? which are further tributaries of हाँ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। वेरी गुड, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट इज। तो ये सारी के सारा जो डेटा है, दिस इज बिलोंगिंग टू अरुणाचल प्रदेश। लेट मी शो यू अ मैप regarding Etalin HEP. Visible? So this is where the Etalin HEP is there. Okay, this particular location right here, Etalin HEP, and this is the entire aspect of Brahmaputra river. Fine. Okay. अब यहाँ पे HEPs बनाने का हमारा एकदम से कंसर्न क्या हो गया? हमने क्यों बनाना शुरू कर दिया भाई? हमने बनाना शुरू कर दिया क्योंकि चाइना ने अपवर्ड एरिया में ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हमेशा जब भी इस एरिया में डैम्स बनाए जाते हैं तो इन्वायरमेंटल इश्यूज कुछ हैं जो न्यूज में रहते हैं। तो उसको लेके एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड जियोलॉजिक एंड साइज्मिक रिस्क्स फ्रेमवर्क। सो दैट इज साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर एंड पीपल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट करती है। लिख लीजिए, साउथ एशिया नेटवर्क, SAN, on dams, rivers and people. Dams, rivers and people has recently highlighted the geological and seismic risks related to the dams. Okay, so recently the Forest Advisory Committee, FAC, अब आपको ये भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या होता है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी हैज asked the Arunachal Pradesh government, ये 2023 की न्यूज है, जनवरी की, has asked the Arunachal Pradesh government to plan the project afresh, दोबारा से जीरो से शुरू करो, plan the project afresh and submit its report. अभी इस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस आया नहीं था, तो इसकी वजह से ये न्यूज में था। अब ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है क्या? So this is a statutory committee under the Forest Conservation Act 1980. लिख लीजिए, statutory committee under the Forest Conservation Act 1980.
Forest Conservation Act 1980, and it comes under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay. करता क्या है, ये बेसिकली फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूजर्स के लिए कभी भी आपको डाइवर्ट करना, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, टाउनशिप है, डैम है, कुछ भी है, तो ये उसके लिए एडवाइस देता है. इसका रोल एडवाइजरी ही है. ठीक है, तो लिख लीजिए, इट्स रोल इज एडवाइजरी इन नेचर. बाइंडिंग नहीं है, एडवाइजरी है, लेकिन मानते हैं क्योंकि जब बनाया गवर्नमेंट ने तो फिर मानना चाहिए. एंड it consider the questions on diversion of forest land for non-forest use. Diversion of forest land for non-forest use. इसके साथ रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन आया था, लेट मी शो यू द क्वेश्चन. 2-3 क्वेश्चंस हैं. 2008 में डैम्स को लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी में. 2 क्वेश्चन इकट्ठे एक ही कॉन्टेक्स्ट में पूछे. देखो, so first is, on which of the following rivers is the Tedi hydropower complex located? 2008 का क्वेश्चन है. So it is on Bhagirathi. Very simple question. Then, where are Tapovan and Vishnugad hydroelectric power plants located? So they are in Uttarakhand. As simple questions आपको आ सकते हैं. तो हो सकता है इतना ना पूछें और सिंपल सा यही पूछ लें कि भाई ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जो इटलिन HEP है, ये कहाँ पे? सो अरुणाचल प्रदेश. ये कौन सी रिवर पे है? टैंगोन एंड द्री, which are tributaries of दिबांग. इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस कम है. ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी यही एक्सपेक्टेड. फाइन. सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो ईटलिन रिवर प्रोजेक्ट के आगे जो चीज न्यूज में रही है वो भी देखते हैं. सो नेक्स्ट इज डैम सेडिमेंटेशन. अब डैम सेडिमेंटेशन बेसिकली क्या है कि मिट्टी भर जाती है जब रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारा सेडिमेंट्स रिवर कैरी करती है और इससे बड़े सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं डैम सेडिमेंटेशन से. ये न्यूज में रहे, एक डाउन टू अर्थ मैगजीन है, वो इन चीजों को बहुत हाईलाइट करता है. ठीक है, तो डैम सेडिमेंटेशन से बेसिकली वाटर स्टोरेज कम हो जाएगा अगर ध्यान से देखा जाए तो. मेजरली दे आर सपोज टू स्टोर वाटर. ठीक है, तो इसको लेके एक रिपोर्ट आया बाय यूएन इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड हेल्थ. देखिए, recent report by UN Institute for World Environment and Health. इनकी रिपोर्ट है, क्या बोलते हैं? Says that about 50,000 large dams across the world, about 50,000 large dams across the world will lose 24 to 28% storage capacity. Will lose 28% storage capacity due to sedimentation. Due to sedimentation by 2050. By 2050. Okay. This can create a water crisis. This can create a water crisis. और 4-5 कंट्रीज उन्होंने हाईलाइट किए हैं. कंट्रीज मोस्ट एट रिस्क, तो आपने 2-3 याद रखनी है. मोस्ट एट रिस्क आर यूके, ओके, देन पनामा, आयरलैंड एंड जापान. पनामा, आयरलैंड एंड जापान. इंडिया को इस रिस्क की कैटेगरी में इन्होंने उतना नहीं डाला क्योंकि हमारे तो डैम अभी नए नए बन रहे. तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? बस आपने जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं टाइम टू टाइम में वो डीसिल्टिंग करनी है, हटाने हैं सेडिमेंट्स. ठीक है, अब एक रिपोर्ट आया था, अनदर वन, स्टेट ऑफ इंडियन डैम्स. तो दैट वाज अनदर रिपोर्ट. इट वाज आल्सो गिवन बाय यूएन ओनली. तो स्टेट ऑफ इंडियन डैम्स रिपोर्ट. So this is given by United Nations. Okay, तो इन्होंने क्या कहा? 3700 डैम्स, हमारे भी इसी रिपोर्ट का पार्ट है, एक तरह से मान सकते हो. 3700 डैम्स
will lose 26% storage capacity. Will lose 26% storage capacity in India. In India. तो जैसे उधर है वैसे ही हमारा भी टेंशन है. Okay. So what is to be done again? Desilting, nothing much. तो टाइम टू टाइम इनकी रिपेयर्स वगैरह सब चलती रहनी चाहिए. नेक्स्ट. नाउ लेट्स look at roads, highways, and so on. Roads. So सबसे पहला एक कंसर्न जो इंडिया में हमेशा रहता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, फिर उसको लेके लंबी चौड़ी डेटा आते हैं, है ना. तो एक्सीडेंट्स का क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो इनको लेके गवर्नमेंट ने क्या वर्कआउट करने की कोशिश की है रोड सेफ्टी को लेके. सो फॉर द इंटायर 2021 this kind of a figure came in the newspaper. Let me show you. It is. So due to speeding, the highest deaths have taken place in India. Okay. If there are road accident deaths in 2021, then dangerous and reckless driving or overtaking. So that is the second largest factor. तो एक तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन सीधा सीधा यही बनता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट फैक्टर फॉर रोड एक्सीडेंटल डेथ्स. सो इट इज स्पीडिंग. ठीक है. सेकंड इज reckless driving or overtaking. Other is anything else, poor weather condition एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी आए. यूपीएससी बहुत शांत स्वभाव से इन चीजों पे क्वेश्चन डालता है. ये कहता है कि recently due to poor weather conditions the most accident deaths have taken place in India. Yeah, poor weather conditions due to stubble burning, whatever, western disturbances, कुछ भी बोले यार, leads to the most of the accidental deaths taking place in India. No, it is speeding. Okay. So it is not poor weather conditions. Poor weather conditions are only responsible for 3% of the deaths. Similarly, driving under influence of alcohol or drugs, that is also just 2%. ठीक है. तो ये बहुत कम फीचर्स हैं. स्पीडिंग और ओवरटेकिंग या डेंजरस रेकलेस ड्राइविंग, यही सबसे बड़े फीचर्स हैं. तो यूपीएससी इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछेगा अगर पूछा तो. ठीक है. अब इन सब को लेके हम कर क्या रहे हैं रोड सेफ्टी जोन को लेके? व्हाट वी हैव डन रिसेंटली. So that is Motor Vehicles Amendment Act 2019. That is the concern. Motor Vehicle Amendment Act 2019. ये भी बहुत न्यूज में रहा, सब जगह सर्कुलेट कर रहा है, इतने इतने चलान जैसे है ना. तो उस वजह से so okay. So it has increased the existing fines for violation of traffic rules. Existing fines for violation of traffic rules. Okay. It is proposed to set up, next one, it is proposed to set up smaller areas as ideal road safety zones. Ideal road safety zones, which will be part of major roads and highways. किसी सड़क का छोटा सा पार्ट ले लेंगे, नेशनल हाईवे का या किसी का भी, तो उसका एक एरिया लेके उसको बोलेंगे दिस इज द आइडियल रोड सेफ्टी जोन. So basically it will incubate any kind of locally suitable or comprehensive safe and practice road practices. जैसे कोई गांव में से निकल रहे हो आप, तो वहां पे क्या है, स्लो डाउन और समथिंग, तो दैट हैज टू बी द आइडियल रोड सेफ्टी जोन. वहां पे आपको क्या क्या फॉलो करना है, लाइक दिस. देन a new administrative structure has been formed to improve road safety. New administrative structure has been formed to implement rather road safety. तो ये 3 tier स्ट्रक्चर है. टीयर 1 में इसमें क्या क्या आता है? सो टीयर 1 consists of managing group. So it will look after the day-to-day operations. It will be autonomous, financially empowered,
अपना काम खुद कर सकता है. Tier 2 will be a district level monitoring group. District level monitoring group. And Tier 3 is top management and control. Tier 3 is top management and control, represented by union or state governments. Union or state governments. ठीक है. ओके. अब इसके अंदर एक दो फैक्ट्स और हैं. So India is a signatory. India is a signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety. India is the signatory to the Brasilia Declaration on Road Safety 2015. Road Safety 2015, which is a global high-level conference. Global high-level conference at Brazil. Okay. And attempts to achieve the SDG 3.6. Attempts to achieve the Sustainable Development Goal 3.6, which is halve the number of global deaths. HALVE. Halve the number of global deaths and injuries from road traffic by 2030. Halve the number of global deaths and injuries from road traffic or road traffic accidents by 2030. इसके अलावा एक डेकेड फॉर एक्शन ऑन रोड सेफ्टी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, या ये कह लीजिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो डेकेड फॉर एक्शन ऑन रोड सेफ्टी, दिस इज 2021 to 2030. Okay, so this entire decade is being observed, and this is being observed by UN General Assembly. UN General Assembly. Okay. इसके अलावा there is something called as International Road Assessment Program, IRAP, International Road Assessment Program. Okay. So this is what is going on in terms of roads right now. Okay. Next, let's go to the solar energy. That has also been in news quite a while. International Solar Alliance और ये सब हमारा इंडिया का है ही. So what all is happening in terms of solar energy? So हिंदू में एक एडिटोरियल आया था, an energy conundrum on India betting big on solar power. ठीक है. तो उसमें अभी एस्पेक्ट क्या है, देखिए. Solar energy has increased from 10 megawatt in 2010, 10 megawatt in 2010 to 50 gigawatt by 2022. 50 gigawatt by 2022. This is in line with India's nationally determined contributions. India's nationally determined contributions to source nearly half of its energy, to source nearly half of its energy from non-fossil fuels, by 2030. Non-fossil fuels by 2030. Okay. And source at least 60% of its renewable energy, 60% of renewable energy from solar energy.
तो ये हमारे कुछ टारगेट्स हैं जिनके बेसिस पे हम चलना चाहते हैं. Okay. Now, what we have done in this. So there are four basic things or four schemes which are working in solar energy right now. हर स्कीम के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि क्या क्या पता होना चाहिए. We should know the ministry which is responsible for implementation. If there is any nodal agency with respect to it, what is the target population जिसको वो बेनिफिट देना चाहती है. ऑल भी हो सकता है जैसे सोलर एनर्जी के अंदर तो है. फिर इसी तरह से उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं. ये कुछ चार चीजें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए. ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक सीमित होता है, बट कभी कभी यूपीएससी इन चारों में से किसी के ऊपर भी खेल सकता है. ठीक है. और अभी हमारी कौन सी चार स्कीम्स है. फर्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो सोलर सेक्टर में काम करती है, आईएसए. सेकेंड इज नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन. थर्ड इज पीएम कुसुम, पीएम कुसुम, दैट इज कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, दैट इज पीएम कुसुम. देन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. ये चार बेसिक इंडेवर सोलर एनर्जी के लेवल पे हमारे चल रहे हैं. ठीक है. तो इनके बारे में पता होना चाहिए चार चीजें. तो ये सब डेटा उधर है स्कीम्स के अंदर. यू कैन टेक इट अप एंड पुट इट हियर. ये चार चीजें यहाँ पे लिखनी है. ओके. नाउ what is the problem with the solar sector in India, and these problems have been in news for valid reasons. सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि we are import dependent. ठीक है. सोलर सेक्टर के अंदर तो लिखिए फर्स्ट इज चैलेंजेस क्या है. insufficient contribution to the power sector. प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्या हैं. वैसे तो ये मेंस में आते हैं लेकिन यहाँ पे डेटा है थोड़ा सा तो, और ये रेगुलर आम जानकारी की बात है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग हियर. ठीक है. तो इनसफिशिएंट कंट्रीब्यूशन टू द पावर सेक्टर. अब ये ना अगर आपको पेपर में आ गया स्टेटमेंट तो आप इसको गलत मान सकते हो. मेरा कंसर्न ये है. सोचने वाली बात है ना कि यार 50 गीगावाट सोलर एनर्जी बन रही है, अभी भी इनसफिशिएंट कंट्रीब्यूशन. इतनी ज्यादा इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है येट. देखिए डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ग्रोथ, despite significant growth in installed capacity, solar power contributed only 3.6%. Solar power contributed only 3.6%. ब्रैकेट में लिखिए 50 बिलियन यूनिट्स, 50 बिलियन यूनिट्स to India's total power generation, which is 1390 billion units in 2020. In 2020 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से डेटा अभी आया है. ठीक है. दिस इज वन ट्रबल. दूसरा हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस. पहली स्टेटमेंट से आपको ट्रबल हो सकता है, दूसरी से नहीं होना चाहिए. हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस. अब ना अलग अलग तरह के सोलर पैनल्स होते हैं, थिन वेफर सोलर पैनल्स एंड ऑल. जितना थिन होगा सोलर पैनल उतना वो पावर एफिशिएंट होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें उतना अच्छा आएगा, हीट में वो लूज नहीं करेगा एनर्जी. दैट्स द कंसिडरेशन. ठीक है. तो इसके अंदर लिखिए currently India's manufacturing capacity is limited to 15 gigawatt per year. Manufacturing capacity is limited to 15 gigawatt
per year. Also, India has no manufacturing capacity for solar wafers and polysilicon ingots. Solar wafers and polysilicon ingots, INGOTS. And therefore imports 100% of solar wafer, 100% of solar wafer, okay, and 80% of solar cells, and 80% of solar cells. तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कुछ खास है नहीं। आज की डेट में ना 90% जो सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो चाइना में हो रही है, वर्ल्ड की, ठीक है। 90% of solar wafer is manufactured by China. That's the problem. So this can be in future, raw material weaponization. वो कह सकते हैं कि मैं तो नहीं भेजता आपको, जियोपॉलिटिकल टेंशन ऐसी हो सकती है और हमारे टारगेट्स ऐसे ही रह जाएं क्योंकि हम तो सोलर वेफर बना नहीं रहे। सोलर वेफर क्या है? वो जिसकी प्लेट सी बनती है जो आपको दिखती है, जिसके बेसिस पे सारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है। तो दैट्स एन इशू। इसके बाद जो नेक्स्ट इशू है वो है सोलर वेस्ट का। जो सोलर सेल होता है ना, वो उसकी लाइफ है 20-25 साल, उसके बाद उसकी एफिशिएंसी नीचे जानी शुरू हो जाती है। 30 इयर्स हम मैक्सिमम एफिशिएंसी मान के चलते हैं, बस लाइफ टाइम मान के चलते हैं। तो 2050 में हमारे पास एक मेजर सोलर वेस्ट की प्रॉब्लम आएगी, दैट विल बी ऑफ अराउंड 1.8 मिलियन टन्स, ओके। और इंडिया के ई वेस्ट रूल्स के अंदर सोलर सेल मैन्युफैक्चरर के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो अपनी वेस्ट खुद मैनेज करें। तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर solar cell manufacturers to abide by e-waste management rules. That will create trouble for us in 2050. Then there are transmission and distribution losses, जो कि सारे energy sector के अंदर हैं। T&D losses, transmission and distribution losses, so they are about 40%. मतलब कहने का है कि अगर जितनी बिजली बन रही है उसमें से 40% तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में खराब हो जाते हैं, हीट लॉस के फॉर्म में। Ohm's law, V is equal to IR, resistance creates trouble. Okay, so these are the concerns with the solar energy sector. Now, एक और चीज न्यूज में रहा लेकिन ज्यादा टेंशन लेने वाला नहीं है, अदानी ग्रुप धारावी डेवलपमेंट कर रहा है। हेलो धारावी, वेयर इज इट? बस इतना भी पता होना चाहिए, धारावी किधर है? There is something called Dharavi redevelopment project. Where is Dharavi? Anybody? Right? It's Mumbai. Okay, so it's in Mumbai and इसमें अब इशू क्या आ रहा है? There is something called as Mahim Nature Park. अब ये माहिम नेचर पार्क जो है, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो जब भी ऐसा कुछ एक नेचर पार्क किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो वो वाला पर्टिकुलर नेचर पार्क पूछ लेते हैं कि कहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। सो दैट वे यू शुड नो अबाउट दिस वन, अदरवाइज आप इसके बारे में पढ़ोगे नहीं कहीं पे, ना ये एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी में आएगा ना कहीं और, ठीक है। तो एक बस इतना याद कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अपने पास, माहिम। माहिम वैसे भी मुंबई में, जिसको पता होगा उसके लिए तो आसान है। तो माहिम नेचर पार्क is in conflict with Dharavi redevelopment project in Mumbai. बस इतना याद रखना है और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसके बारे में, ठीक है। ये सारा क्लस्टर मेकओवर अभी अदानी ग्रुप के पास है, करीब 23,000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मान के चल रहे हैं वहां पे। दैट्स वन।
Next, let's go to ports and shipping. Ports and shipping. ये ना वो वाले एरियाज हैं जो हम आमतौर पे टच नहीं करते सारा साल। फिर यूपीएससी अगर एक आधा क्वेश्चन भी पूछ लेना तो गड़बड़ हो जाते। और 2022 में दिस वाज इन न्यूज इन नवंबर 2022 that we are creating a national center of excellence for green port and shipping. National Center for National Center of Excellence, sorry, of Excellence for green ports and shipping. Are you able to write at this speed, Namika? All right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. So National Center for of Excellence for Green Ports and Shipping. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो पहले तो यही पता होना चाहिए भाई कहाँ पे, वेयर इज इट? इट इज एट मुंबई. Okay. And this was launched at a particular event that's called INMARCO. It was launched at INMARCO 2022. INMARCO 2022 ये क्या है? ये हर 4 साल में एक बार इवेंट होता है, क्वाड्रेनियल इवेंट है. इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल मैरिटाइम कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन. International Maritime Conference and Exhibition. So once in 4 years, quadrennial event hai, and it is hosted by Institute of Marine Engineers India. Hosted by Institute of Marine Engineers India. So at this occasion, we started India's first National Center of Excellence for Green Ports and Shipping. ये launch किया गया था. Okay. So अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? That is the second most important thing to be asked for prelims. मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? So here the ministry is very simple. Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Okay. करेंगे क्या? Greener solution provide करने हैं at ports, and this is essentially a framework of Sagarmala program. Okay. This is the framework under Sagarmala program. सागरमाला प्रोग्राम बहुत देर से चल ही रहा है. इसमें बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पोर्ट्स को रीडेवलप करना है. दैट इज सागरमाला प्रोजेक्ट. ठीक है. सो इसको लेके भी अभी रिसेंट कुछ करंट अफेयर्स हुए हैं, तो विल कम टू दैट सागरमाला प्रोग्राम सेपरेटली आल्सो राइट आफ्टर दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम. देन ये करेगा क्या दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? सो इट विल डेवलप अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क for green shipping, okay. Make use of solar and wind generated power. And is an attempt towards realizing the life movement. So Prime Minister ने launch किया था ना, LIFE, life movement, that is lifestyle for environment movement. Lifestyle for the environment movement started by the Prime Minister. अब इसमें कॉन्क्रीट एम्स क्या हैं जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो लिखिए. अंडर दिस द पोर्ट्स aim to reduce carbon emission per ton of cargo handled,
by 30%. Handled by 30% by 2030. That is the first concrete target. Then second, Maritime Vision Document 2030. Maritime Vision Document 2030 is a 10-year blueprint. Is a 10-year blueprint for India's vision of a sustainable maritime sector. Sustainable maritime sector. In this regard, तो जो ब्लू इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी के साथ ये भी लिंक्ड है. एक इसमें रिलेटेड इवेंट और है. In 2022, India has been selected as the first country. In 2022, India has been selected as the first country under the IMO's Green Voyage project. Under the IMO, that is International Maritime Organization. Green Voyage project or Green Voyage 2050 project to conduct a pilot project related to green shipping. To conduct a pilot project related to green shipping. ये 2019 में नॉर्वे के अंदर लॉन्च किया गया था by International Maritime Organization. तो thereafter अब इंडिया उसमें फर्स्ट कंट्री है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा. ग्लोबल पार्टनरशिप. So far so good. इतना हो गया. अब आ रही है सागरमाला प्रोजेक्ट के ऊपर. सागरमाला के बेसिक्स आपने पढ़ रखा होगा. 2015 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया इसको. ओके. करना क्या है, ये पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को होलिस्टिकली डेवलप करना चाहता है हमारी कोस्ट लाइन के अंदर थ्रू मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन. ठीक है. सो इसका फोकस है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. फिल्म्स में इतना का आइडेंटिफिकेशन बहुत होता है. ठीक है. क्या करेंगे इसके थ्रू? वी विल रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट. इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे व्हाट यू वांट टू डू इज रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट. ठीक है. मोर ओवर इसके साथ एक एड ऑन बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का रेवेन्यू है उसको बूस्ट मिलेगा बाय अबाउट टू अबाउट 110 बिलियन यूएस डॉलर्स. दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव बाय 2025. तो लिख लीजिए. It could boost India's merchandise export. It could boost India's merchandise export, that is goods basically, goods export to 110 billion US dollars by 2025. So that's the project. And moreover, it will also create 10 million new jobs. 10 million new jobs directly and indirectly, जिसमें से 4 million डायरेक्ट होंगे जो कि इन्हीं पोर्ट्स पे काम करेंगे. ठीक है. रिसेंटली एक प्रोजेक्ट सागरमाला सी प्लेन सर्विस भी लॉन्च किया गया था 2022 में. तो प्रोजेक्ट सागरमाला सी प्लेन सर्विस that was also started as a part and parcel of सागरमाला प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे क्या है, एयरलाइन ऑपरेटर्स को काम करना था. ठीक है. तो दिस इज द सागरमाला प्रोजेक्ट as it is.
ये सी प्लेन सर्विस शायद आपने देखा हो, मोदी जी वेंट एंड लॉन्च्ड इट। फिक्स्ड विंग एरोप्लेन है जो पानी में से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, उसको शुरू करवाया था। तो इसके अंदर अब प्रपोजल है कि अलग अलग हमारे जो पोर्ट्स हैं दे विल बी लोकेटेड फॉर द टूरिज्म पर्पसेस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो दिस इज द वन। तो सी प्लेन सर्विसेज तो यमुना में चलेगी, चंडीगढ़ में भी उतर सकता है, लैंड और वाटर दोनों पे उतर सकता है, कांडला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू कैन गो टू वेरियस ports and this can be a tourism upgrade। ये रूट जो है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज्ड तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर उड़ान स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक। ठीक है, दैट्स द बेनिफिट। सो इट्स एसेंशियली लाइक टूरिज्म, और इसमें कुछ खास नहीं है। फिलहाल ऐसी एक पहली सर्विस जो शुरू की गई थी दैट वाज इन द केवड़िया एंड साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद। दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। सो केवड़िया साबरमती, दैट्स वेयर इट इज वर्किंग। ठीक है, अक्टूबर 2020 यहाँ पे शुरू किया गया था। ओके, गुजरात अहमदाबाद, दैट्स वेयर इट वाज स्टार्टेड। देन फ्रॉम देयर ऑन इट इज वर्किंग एज ऑफ नाउ। ओके, हो गया। नेक्स्ट, अब ये जो इंडिया नॉर्वे मैरिटाइम कॉर्पोरेशन है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात की जाए तो बेटर होगा। जैसे हमने अभी बात किया कि देयर इज दिस India has been chosen as the first country in the International Maritime Organization's Green Voyage. So here, this particular thing is also to be considered here, India-Norway Maritime Coordination, Maritime Cooperation और Coordination, कैसे भी लिख लो। तो हमने नॉर्वे के साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप एस्टैब्लिश किया है for this particular purpose, and that will provide us with the entire technical expertise in the maritime sector for this purpose. So, like, Norway has established a joint working group with India to provide technical expertise and help India achieve its Maritime India Vision 2030. Maritime India Vision 2030. मैरिटाइम इंडिया विजन जो है वो 10 थीम्स पे काम करता है। ठीक है, अब वो 10 थीम्स कौन कौन से हैं वो आपके स्कीम वाले जो मैंने प्रोग्राम दिया है उसमें होने चाहिए। सो जस्ट एक बार इनको रीडिंग मारना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, डोंट ट्राई टू मग देम अप। सो यू गेट अ बेसिक आइडिया कि क्या होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट इन क्लास पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, drive exchange to exchange logistic efficiency and cost competitiveness, enhance logistics efficiency through technology and innovation, strengthen policy and institutional framework, enhance global share in shipbuilding, repair and recycling, enhance cargo passenger movement through inland waterways, promote ocean, coastal and river cruise sector tourism, enhance India's global stature and maritime cooperation, lead this world in safe, sustainable and green maritime sector, become top seafaring nation with world-class education, research and training. So that is the Maritime India Vision 2030. This is something that we wish to achieve by 2030. Okay. अब इसमें कुछ टारगेट्स हैं। जो टारगेट्स हैं वो आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं। So that's what I'm putting up. So give a heading, key targets 2030 under Maritime India Vision. Key targets 2030 under Maritime India Vision. इसमें से कौन से याद रखने? पहला, 3 major ports with more than 300 million ton per annum cargo handling capacity. एक तो हमें ये बनाना है। दूसरा, more than 75% of Indian cargo transshipment handled by Indian power. ट्रांसशिपमेंट होती है जो चीजें पहले इंडिया में आ रही हैं फिर इंडिया से आगे
किसी और कंट्री में जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसशिपमेंट। तो हम ऐसा ट्रांसशिपमेंट हब एक बनाना चाहते थे, लेकिन टूटिकोरिन वाज द पोर्ट दैट वाज सिलेक्टेड फॉर इट, लेकिन राम सेतु केम इन बिटवीन। तो सोनिया गांधी जी के टाइम पे ये कोशिश किया गया था कि राम सेतु को ड्रेजिंग करके एंड देन यू कैन जस्ट मेक श्योर कि वहां पे एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाई जाए। अब तो आपको मालूम है कि मूवी भी आ गई उसके ऊपर, है ना? तो उसका कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? So this stopped, but now we want to see something else. Right now, ships have to sail from श्रीलंका बॉर्डर्स के ऊपर से घूम के आती है, फिर इधर वियतनाम और हमारे बाकी के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाती है, चाइना में जाती है। सो उस वजह से एक एक्स्ट्रा टाइम, इंश्योरेंस कॉस्ट, फ्यूल, सब चीजें लगती हैं। तो ये ट्रांसशिपमेंट हब के अंदर इंडिया की काफी पॉसिबिलिटी थी कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट बने, लेकिन ये हो नहीं पाया फॉर रिलीजियस रीजंस। देन more than 85% cargo handled at major ports by public-private partnerships or other operators. Fourth, average vessel turnaround time for containers of to be less than 20 hours. मतलब जो कंटेनर है जैसी शिप पे डॉक किया तो 20 घंटे के अंदर अंदर सारी प्रोसेसिंग हो जाए और शिप जो है वो वापस जा सके अपने कंटेनर भर के। ये शिप्स जितना चलती रहेंगी उतना ज्यादा अर्न करेंगी अपनी कंपनीज के लिए। Global ranking of top 10 shipbuilding and ship repair, more than 15 lakh annual cruise passengers, more than 60% share in renewable energy at ports. These are the key targets for Vision 2030, and these can be asked in prelims with respect to the Maritime India Vision 2030. इनकी आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, ठीक है? ये उसमें डॉक्यूमेंट में होने चाहिए आपके पास, तो इन एनी केस यू शुड रिमेंबर। ओके, चलें आगे। हेलो, डन सो फार? क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अब ये जो लाइफ मूवमेंट है ये क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बजट में भी इसके बारे में बात हुआ। सो पता चला, हम सोचें कि ये तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यूपीएससी को लगे कि प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया तो बड़ा खास है, बात करो इसके ऊपर। लाइफ मूवमेंट ये क्या है? सो इट इज बेसिकली एन एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल काइंड ऑफ थिंग, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। तो इसी के एंगल में थोड़ा सा लिखते हैं। सो द आइडिया ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, idea of life was introduced by India at the 26th or COP26, COP26, that is UN Climate Change Conference of Parties, UN Climate Change Conference of Parties in Glasgow, 2021। यहाँ पे इसका आइडिया लॉन्च हुआ था इन्वायरमेंटली कॉन्शियस लाइफस्टाइल के बारे में। तो उन्होंने बोला कि यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी बंद होनी चाहिए, प्रो प्लैनेट पीपल होने चाहिए। P3 फ्रेमवर्क हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला, P3, that is pro planet people, so that's what we should become. Okay, अब इसके अंदर जो एस्पेक्ट्स अभी रिसेंटली बिल्ड हुए, तो सितंबर 2022 में एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कुछ नया लॉन्च किया अंडर दिस लाइफ मूवमेंट ओनली। इन सितंबर 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ पावर and new and renewable energy, the Ministry of Power and New and Renewable Energy has launched Agni Tattva, campaign। मुझे ब्रह्मास्त्र मूवी याद आई। अग्नि तत्व campaign to create awareness about the core concept of Agni Tattva, create awareness about the core concept of Agni Tattva,
comma an element that is synonymous with energy. अग्नि तत्व का एस्पेक्ट है क्या बेसिकली, synonymous with energy and a part of पंचम महाभूत या पंच महाभूत is a part of पंच महाभूत, बेसिक 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। तो 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। सॉरी, हाँ, आकाश एंड वायु। आकाश यहाँ पे स्पेस को बोलते हैं, ईथर को बोलते हैं। रिटन? हेलो हेलो। कुछ नहीं, आइडियोलॉजिकल ट्रांजैक्शन है इसमें, कुछ खास अभी तक इतनी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ओके। इसको लेके इनिशिएटिव्स कौन कौन से चल रहे हैं जो लाइफ मूवमेंट को कवर करते हैं? तो ऑन गोइंग स्कीम्स क्या हैं गवर्नमेंट की जो इसके साथ रिलेटेड है? सबसे पहला तो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम ये चल रहा है रिलेटेड टू दिस। दूसरा, related to this we are having the national mission for green India, national mission for green India. Third, we are having the national action plan on climate change, national action plan on climate change, third one. Then fourth, we are having the national biodiversity action plan, national biodiversity action plan. Okay, देख लीजिए। Then fifth one are the rural livelihood schemes, जहाँ पे बेसिकली मनरेगा और एनआरएलएम इनमें से लोगों से काम लिया जा रहा है टू क्रिएट एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली काइंड ऑफ सिचुएशन। ओके, अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो इंडिया में आमतौर पे ये बोला जाता है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। ठीक है, ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट infrastructure deficit country in the world after Brazil. Brazil नंबर 1 पे, मतलब जितना चाहिए सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर ब्राजील में, और फिर इंडिया है दूसरे नंबर पे। ठीक है, देन एज पर वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये इसके ऊपर 2022 में, वो क्या है? फाइनेंसिंग इंडिया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, फाइनेंसिंग इंडिया urban infrastructure needs by 2036, by 2036 40% of Indian population will be living in urban cities. 40% of population will be urban. सिंपल सी बात। अभी कितनी? अभी करीब 33% है। 67% is rural, 33% is urban right now. So it seems very feasible कि शायद उससे पहले ही हो जाए। ठीक है, आगे लिखिए। Only 5% of infrastructure needs, only 5% of infrastructure needs are financed through private sector. सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड अवेलेबल कौन करा रहा है? गवर्नमेंट। एंड 95% इज बाय गवर्नमेंट। अब इसको लेके गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या क्या लॉन्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए? तो उन पूरे इनिशिएटिव्स की एक लिस्ट है लंबी चौड़ी। तो सबसे पहला तो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स
First is National Infrastructure Pipeline. So this was to work from the period of 2020 to 2025. Okay, फाइनेंशियल ईयर क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था की फोकस एरियाज के अंदर. दूसरा है गति शक्ति स्कीम. आई एम नॉट गिविंग द डिटेल्स हियर, यू ऑलरेडी हैव द डॉक्यूमेंट विद ऑल द डिटेल्स. सेकंड वाज गति शक्ति स्कीम. Third is National Infrastructure and Investment Fund, NIIF. Fourth scheme in this related is I2U2, as India, Israel, US and UAE. I2U2 इसके बारे में देखो. India, Israel, US and UAE. इन्होंने क्या किया लिखे. In November 2021, they established a new quadrilateral forum, a quadrilateral economic forum, quadrilateral economic forum, to focus on infrastructure development projects. Focus on infrastructure development projects and strengthen bilateral cooperation. And strengthen bilateral cooperation. Then fifth one. In March 2021, the Parliament passed a bill. To set up a national bank for financing infrastructure and development. National Bank for Financing Infrastructure and Development, NABFID. National Bank for Financing Infrastructure and Development. ठीक है, तो ये आया था. इसके बाद नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी कंडक्ट किया था. उसके अंदर ना ऐसा एक रोड ब्लॉक्स दिए थे की सेक्टर के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कि प्रॉब्लम क्या है. तो हाईवेज में प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा इमेज ग्रुप के अंदर. सो हाईवे में डिलेज इन लैंड एक्विजिशन, लेंडर स्टॉप लेंडिंग मिडवे. जो बैंक्स होते हैं वो उनका खुद का डिफॉल्ट हो जाता है. ठीक है. देन टेंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स टू लो ट्रैफिक एंट्री. तो वहां प्रोजेक्ट्स चले जाते हैं जहां पे इतना ट्रैफिक नहीं होता रोड्स में, तो उसकी वजह से फिर टोल कलेक्शन वगैरह में ट्रबल आता है. अनक्लियर एग्जिट पॉलिसी फॉर रोड डेवलपर. एग्जिट पॉलिसी का मतलब होता है अगर उसका दिवालिया निकल जाए, बैंकरप्सी हो जाए, तो वो बंदा एग्जिट कैसे करेगा, तो उसको इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में क्या बेनिफिट है. देन NHAI is the developer as well as the regulator, which causes conflict of interest in cases of arbitration. So there is a need for clear distinction of the roles of NHAI. NHAI खुद भी अपनी सड़क बना रहा है अपनी टीम से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनवा भी रहा है. तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. अच्छे प्रोजेक्ट्स वो अपने पास रख लेता है, जो बेकार से होते हैं वो पीपीपी में चले जाते हैं. ठीक है. Ports. So multiple changes in tariff setup by tariff authority of major ports makes it difficult to evaluate the cost of projects. That is major problem with this. And there are delays in tariff fixation also. वो भी clearly set नहीं हो पाते. ठीक है. Airports. So there is a lack of consistency in tariff methodology and concession tariff framework. Essentially tariff का यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो वो डिसाइड करता है. तो उसमें ट्रबल है. हर एयरपोर्ट में अलग अलग है क्योंकि उनका जहां पे जितना डेवलपमेंट चार्ज है उस हिसाब से रखा है उन्होंने. स्विचिंग फ्रॉम सिंगल टिल टैरिफ मेथड टू हाइब्रिड टिल क्रिएट्स डिफिकल्टी इन असेसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. तो पीपीपी वाले फिर जल्दी जल्दी लेते नहीं उसको, अदानी को छोड़ के, क्योंकि उसको तो पता है कि सरकारी पैसा मिल ही जाएगा. Delays in the passage of tariff orders causes the problems in timely execution of the projects. Then wind projects. इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? Inconsistent policy at central and state government level. Accelerated depreciation leads to non-viability. State regulators do not honor renewable purchase obligations. उनको ऑब्लिगेशन है कि इतना एनर्जी तुम कम से कम रिन्यूएबल सेक्टर से खरीदोगे, और वो नहीं खरीदते. इसकी वजह से भी ट्रबल आता है. देन टेलीकॉम. सो लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी
as far as 4G, 5G, everything is concerned. Inconsistent policy and regulator framework. Government refuses to honor the public-private agreements signed earlier. जितने भी परचेज एग्रीमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट कहते हैं नहीं दोबारा से चलो. अग्रेसिव बिडिंग टू सम एक्सटेंट, जैसे जियो वगैरह कर पाएंगे, नए प्लेयर्स नहीं कर पाएंगे. देन पावर, coal block deallocation causing execution delays and losses to project developers. कोल ब्लॉक के लाइसेंसेस रद्द कर दिए गए. मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे इसमें घोटाला हुआ था, इस वजह से काम रुका हुआ. न्यू ऑक्शन बेस्ड कोल linkage approved by government in 2017. Uncertainty remains regarding the validity of old contracts. तो अब क्या ऑक्शन बेस्ड नए तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आ गए, तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को लेके अभी पता नहीं वैलिड है या नहीं. इनफैक्ट कोल सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए गए थे 2020 में, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम है. Inconsistency in the interpretation of PPA, inconsistency in the central and state regulations. For instance, Central Electricity Act allows open access, but state governments do not adhere to it, causing the problems in execution. Open access कहने का मतलब तुम कोल माइन को जैसे भी यूज करो. Unstable financial health of state utility causes a delay in payment cycle. तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको खुद के पास फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है, तो जो कोल खरीदते हैं फिर वो उसमें भी गड़बड़ आती है कहीं ना कहीं. Greenfield projects, so anything you are starting new, so their land acquisition is always delayed. Nature of developer have been contractors, which lead to low cost bidding, making the project unviable. Bank loans are given out for 10, 15 or 18 years, but the interest on overall investment return evaluation, sometimes 8% interest rates are increased up to 14 to 15%, rendering the projects unviable. तो जो lending rates हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं greenfield projects में, तो that makes it unviable. Now brownfield projects जो already existing हैं और उसमें government कुछ better करने की कोशिश करती है reinvest करके. So government questions the validity of existing project. इसको क्यों चलाया है? For example, with the rates of solar energy slashing, will the contracts entered on higher tariff remain valid or not? There is a strong need for ability to have more credible infrastructure developers and partners. A unified logistics interface platform, ULIP, is designed to enhance efficiency and reduce cost of logistics by creating transparent one window platform. So ULIP जो आपने भी पढ़ा वो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन बाकी काम अभी इसमें रुके हुए हैं. So these are the roadblocks in the key infrastructure sectors which are being faced right away. So these are the major current affairs that we were to deal with. अब एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड हमने पढ़ा जैसे, तो उसकी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी लेटली, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वही उसको चेयर भी करते हैं. इसमें कुछ 2-3 चीजें निकल के आई हैं, वो भी देख लेते हैं. दैट इज द लास्ट फॉर द डेट. So National Infrastructure Investment Fund. What is new here? NIIF. So recently, in November 2022, Ministry of Finance and Corporate Affairs, दो अलग-अलग ministries हैं, chaired the fifth meeting of the Governing Council. Fifth meeting of the Governing Council of NIIF. अब इसके हाईलाइट क्या है? पहला तो एक इंडिया जापान फंड क्रिएट किया हमने, इंडिया जापान फंड. What is this? So NIF and Japan Bank for International Development, NIIF and Japan Bank for International Development, JBIC बोलते हैं उसको, है डेवलपमेंट लेकिन कंस्ट्रक्शन या ऐसा कुछ भी, have proposed to establish
have proposed to establish NIIF's first bilateral fund, NIIF's first bilateral fund with contributions coming from Government of India. With contributions coming from Government of India. Okay. तो ये इम्पोर्टेंट था फंड. बाकी भी बहुत कुछ हुआ उसमें. उन्होंने बात किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन कैसा चल रहा है, गति शक्ति कैसा चल रहा है, ये सब इनके अंदर अपॉर्चुनिटीज ये सब डिस्कस हुआ. बट दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मेजरली तो यही था. इससे पहले अब जो 3 तरह के फंड हैं जो NIIFL मैनेज करता है उसके ऊपर चर्चा हुई. तो वो 3 तरह के फंड कौन से हैं ये पता होना चाहिए. तो आगे लिखिए. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स. 3 types of funds which are managed. मैं कहा था ना, दे आर प्रोफेशनली मैनेज्ड जो भी इसमें फंड होते हैं. तो मैनेज्ड बाय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड. फर्स्ट इज द मास्टर फंड. Master fund. So this invests primarily in operating assets. Invests primarily in operating assets जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ चल रहा है जिसमें से पैसा बन रहा है, वहां पे इसमें से इन्वेस्टमेंट की जाती है. In core infrastructure sector. In core infrastructure sector such as roads, ports, airports and power. इनको बोलते हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो जो ऑलरेडी जैसे कोई एक एयरपोर्ट चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करेगा. तो मास्टर फंड का ये काम होता है. दूसरा है फंड ऑफ फंड्स. फंड ऑफ फंड्स ये क्या करता है? So it is managed by fund managers with experience in infrastructure. Managed by fund managers. तो प्राइवेट या पब्लिक कोई भी फंड मैनेजर्स हो सकते हैं. With experience in infrastructure and works in green infrastructure. इसके एरियाज ऑफ ऑपरेशन क्या है? ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग. मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग. देन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज. इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इस सब में काम करता है फंड ऑफ फंड्स. थर्ड, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज फंड. स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड SOF. स्ट्रेटेजिक का आमतौर पे मतलब होता है लॉन्ग टर्म. ठीक है. तो लिखिए, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल. Provide long-term capital to high growth future ready businesses in India. High growth future ready businesses in India. जैसे कोई सेमीकंडक्टर चिप बनाना चाहता है वैसे उनके लिए फ्यूचर रेडी बिजनेसेस इन इंडिया. तो ये बेसिकली क्या होगा? इट विल आल्सो बी ग्रुप जहाँ पे ये पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, पैसा देंगे और बदले में शेयर खरीदेंगे. किसका खरीदेंगे? लेट्स से यूनिकॉर्न्स एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड डोमेस्टिक चैंपियंस, MSME सेक्टर, तो उनके बारे में करेंगे. तो बिल्ड इक्विटी लोन्स प्रोवाइड करेंगे किनको? यूनिकॉर्न्स प्लस चैंपियंस MSME के अंदर जो सिलेक्टेड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है. So that's what we want to do. And moreover, ये NIIF जो है ये बेसिकली करेगा क्या? तो इसमें थोड़ा सा 2-3 चीजें और लिख लीजिए. Within NIIF, 49% stake is held by Government of India.
within NIIF, 49% stake is held by Government of India, and the rest is held by foreign and domestic investors. Foreign and domestic private investors, कहने का मतलब ये private investors. So that is NIF. Okay. And central government का state ही इसमें ज्यादा होगा. It is a quasi sovereign wealth fund. इस 49% stake की वजह से बोलते हैं it's a quasi sovereign wealth fund. ये सरकार का भी पैसा है लेकिन पूरा सरकार का नहीं. ठीक है. And across this funds there is right now about 4.3 billion US dollars का capital है as of now. 4.3 billion US dollars, that's the capital, and this is right now housed at Delhi. इनके लिए पूरा एक ऑफिस बनाया गया, रजिस्टर्ड ऑफिस, that's in Delhi. 2015 में इसको सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था, and it is considered as a category 2 alternative investment fund. Category 2 AIF, alternative investment fund. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? शेयर्स और स्टॉक्स को छोड़ के जो भी तुम इन्वेस्ट करते हो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. अब उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज से भी डेवलप करता है. ठीक है. कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये सब सेबी की मुसीबतें हैं, तो ये सब वो रेगुलेट करता है. तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर एक वर्कआउट कर लेते हैं छोटा सा, एंड देन विल फिनिश टुडेस लेक्चर. लिख लीजिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मींस ए फंड established in India, which is privately pooled investment vehicle, which collects from sophisticated investors, ब्रैकेट में लिख दीजिए इंडियन और फॉरेन, comma, to invest according to defined policy. And it is regulated by SEBI. इसमें 3 कैटेगरीज हैं हमारे पास. कैटेगरी 1, 2 एंड 3 AIF के अंदर कैटेगरीज होते हैं. तो उसमें क्या क्या आता है, ये प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन आपका बढ़िया सा बन सकता है. तो ये हमेशा करंट अफेयर में कहीं ना कहीं जरूर रहते हैं कैटेगरीज. तो ये लिखिए. तो फर्स्ट इज कैटेगरी 1 AIF. दे आर जनरली इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स. तो कैटेगरी 1 के साथ आपने स्टार्टअप्स या अर्ली स्टेज वेंचर्स, एक ही बात है, which the government or regulators consider as socially or economically desirable. For example, venture capital funds and infrastructure funds. जैसे हमारा है ना RIET, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. ओके. दूसरा है कैटेगरी 2 AIFs. तो ये बेसिकली 1 और 3 में नहीं आते. इसमें क्या होता है, they do not undertake leverage or borrowing other than to meet day-to-day operations and requirements which are permitted in SEBI regulation 2012. क्या करेंगे, रियल एस्टेट और प्राइवेट इक्विटी के लिए है. डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करने के लिए फंड इकट्ठा किया जाता है. जैसे सपोज तुम एक सोसाइटी में रहते हो, तो वहां पे सफाई कराना है, गार्डनिंग, सिक्योरिटी, ये सब मैनेज करना है. तो इन सब चीजों के लिए एक अलग से फंड वो क्रिएट कर लेते हैं सोसाइटी के अंदर. तो दे आर लाइक दिस. ठीक है. सो दे आर डे टू डे मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन काइंड ऑफ फंड. दे डोंट टेक अप बोरोइंग, दे डोंट टेक अप एनीथिंग. उसमें जो लोग वहां पे बेनिफिशियरीज हैं वही अपना फंड इकट्ठा करके रखते हैं. देन देयर आर कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है वो यहाँ पे आता है, NIIF. तो NIIF में भी इट इज अ कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. करते क्या है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं. कैसे कैसे करते हैं वो हमने देख लिया.
लेकिन वो किसी से बोरो नहीं करते, लोग अपना पैसा खुद भी पार्क करके रखेंगे फॉर द पर्सनल बेनिफिटेशन. Then category 3 AIF, so this employs diverse or complex trading strategies and may employ leverage, मतलब borrowing, including through investment in listed or under unlisted derivatives. Unlisted मतलब किसी भी तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, जैसे कि हेज फंड्स आर अनलिस्टेड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड्स कैसे भी कर सकते हैं. ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ठीक है. अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज कैटेगरी 3. तो 3 तरह के हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3. मैच द फॉलोइंग में इसके एग्जांपल्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ट्राई एंड वर्क ऑन द एग्जांपल्स मोर. आई होप इट्स क्लियर. डन. ओके, सो अब शाम वाली क्लास में आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसके साथ साथ देन यू जस्ट गो थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट डॉक्यूमेंट दैट आई प्रोवाइडेड यू, उसके साथ साथ ही उसको वर्कआउट भी कर लेंगे. आज के लिए अभी ना काफी, ठीक है.